with Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary turning down the invite, calling Ram Lalla's Pran Pratishtha a BJP event. जहां टीवी खोलो देश में और कुछ नहीं, सिर्फ राम मंदिर ही है। चुनाव राम मंदिर मोदी पार करना चाहते हैं, बस यही उनका मकसद है। इसलिए हमें लगा कि इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हाजिर रहना मुनासिब नहीं होगी। जब धर्माचार्य करान भी नहीं रहे हैं बल्कि बहिष्कार कर रहे हैं, तो ऐसे में तो कांग्रेस को जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। कांग्रेस ने थोड़ी कहा है कि धार्मिक कृत्य नहीं है, ये तो साधु संत कह रहे हैं। But rejecting Ram Mandir invite has made Congress a divided house, with many openly opposing the top brass. ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। The BJP hit back saying that people will boycott anti-Hindu Congress in polls for its Mandir boycott. मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। Akhilesh Yadav, Lalu Prasad, Mamata Banerjee, Uddhav Thackeray and the left have already rejected Ayodhya invite. Nitish Kumar too appeared doubtful. धार्मिक क्षेत्रों में भी और राजनीतिक क्षेत्रों में भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसी में एक कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी शामिल है। नीतीश जी को भी निमंत्रण मिला है और अभी उनको अंतिम फैसला लेना इस पर बाकी है। By boycotting the biggest ever faith event for Hindus, has the India bloc scored a massive self-goal? Bureau Report, India Today. And as we get to all the reactions that come in, it's something that we will continue to track very closely here on India Today. But I want to now tell you about what's happening here in Ayodhya. I've been spending the last few days in the city, and with all of the controversy over the car sevaks, and particularly the firing that happened in 1990, I decided to speak to some of them. There are scores of them who live even now in Ayodhya. Their dream of seeing a Ram Mandir in their soil, in their lifetime, is coming true. But they also, of course, live with the scars of what happened in 1990 when the then Mulayam government had authorized the firing on car sevaks. Here is my report where I also spoke to several of them. With days to go for the Mandir Pran Pratishtha, the city of Ayodhya is gearing up for the historic moment that they've awaited for decades. And no one more than the car sevaks who fought for this very moment, for the Ram Mandir. In 1990, the then Mulayam Singh government authorized the firing on car sevaks in Ayodhya, leading to unprecedented bloodshed in the holy city. 33 years on, the wounds are still fresh, but healed by the Mandir opening. It's in these lanes in 1990 that car sevaks were fired upon. Now, while you see all around me development now of shops that have come up, this lane is a grim reminder of what happened so many years ago. It's called
Shahid Gali in remembrance of all of those who died in that firing that was ordered by the then Mulayam Singh government. People were in fact stranded across these lanes. Many of them ran in these directions. Many were on the rooftops hoping to find some sort of protection, some shield from the cops who were firing at them indiscriminately. For these car sevaks who since 1990 have been part of movements, dharnas and protests for a Ram Mandir, they are overjoyed today and believe their efforts have paid off. आज तो हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि लग रहा है कि राम राज्य है। लेकिन उस समय की जो स्थिति थी वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतने भयभीत रहते थे, कांपते थे हम लोग, रोड पर निकलने में भय लगता था। ये स्थिति हम लोग सब साथ में थे। श्रीमान नामदास छावनी है, उसी आश्रम में हम लोग काफी प्रसन्न थे। तो वहाँ से हम लोग भोजन करते थे और कभी उधर बगीचा में भागते थे तो कभी उधर माझा में भागते थे। साधु महात्मा जो अयोध्या के थे उन लोग को अपमान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। ये लोग भयभीत रहते थे, जैसे हम लोग चोरी किए, डकैती, डाका डाले, इस तरह से जैसे एक चोर भयभीत रहता है वैसे भयभीत रहते थे। जो राम भक्त लोग आए थे वे कोई भी हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लिए हुए थे। वे केवल एक शांति पूर्वक एक आंदोलन कर रहे थे और श्री राम जन्मभूमि की मांग कर रहे थे कि हम लोगों को राम जन्मभूमि तक जाने दिया जाए। पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगा रखा था और उन्होंने कह रखा था कि उत्तर प्रदेश में एक पक्षी परिंदा नहीं मार सकता, कोई पक्षी वहां नहीं जा सकती है। सभी मार्ग बंद कर दिए गए थे, फिर भी इतनी संख्या में लोग आए गए थे। लोगों में इतना उत्साह था श्री राम मंदिर को लेकर के कि वे घबरा गए। उसने गोली चलाने के आदेश दिया और उस आदेश से काफी नुकसान हुआ। The car sevaks in Ayodhya have all been invited for the grand Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya on January 22nd. With Akshita Nandagopal in Ayodhya, Bureau Report, India Today. With just days to go for the grand consecration ceremony on January 22nd, there is of course an influx of tourists into Ayodhya. And there are a lot of questions about whether Ayodhya is really geared to become the big tourism city that the government envisions it to be. Now, if you as a tourist are looking to come to Ayodhya, what are your options really? What are your stay options? There are limited hotels in Ayodhya and most of them for the next few weeks are completely booked out. So what really are your options? Well, I also took a look at some of the facilities put in place by the government. Take a look at this report on the options if you're choosing to come to Ayodhya. Ayodhya is becoming a massive tourist attraction. But is the city prepared for the lakhs of people expected? With hotels now charging up to 5 times more than the usual and an 80% rise in bookings, it's a challenge for authorities to ensure adequate accommodation for the lakhs of people expected on January 22nd. And that is why they have now come up with a tent city in several parts of Ayodhya. For those of you planning to come to Ayodhya and are unable to find hotel rooms, here are some options. Now, obviously, Ayodhya is going to see a huge influx of tourists from across India, across the world for the next few months. And if you're wondering, how do I make it to Ayodhya without a hotel booking? And you're thinking that, there's no premium hotel that's really come up in Ayodhya. What do I do? The government has ensured a solution for you. You can even go ahead and glamp in Ayodhya because these kind of deluxe tents have now been put up very, very close to the city, very close to the temple. With 50 such tents put up in one area, authorities are ensuring premium facilities are available as well. So these are tents which are essentially meant for 2 people to live in. You can see that there's adequate bedding provided here. A very cozy feeling that you get. You've got quilts considering it's winter. There's an air conditioner / heater based on what you need it to do. And the setup, because it's going to be there for the next 3 months, it's also expected to get a bit hot in Ayodhya. So this is going to be very, very helpful.
These premium tents, which will be available at a cost but on a booking basis, and will be there for another 3 months to deal with the expected rush to visit Ram Mandir for the next few months. But besides visitors who will be staying in hotels, there is also expected to be a huge influx of saints and sadhus. And this too the government has kept in mind. Now, what you see here is a dormitory of sort that's been set up by the government to ensure that people who come into Ayodhya and with hotels completely full don't run out of place to sleep. So this is set up by the government. As you can see, beds have been put up. You've got pillows. You've got 3 quilts because it's winter. They've ensured that they've provided that facility as well. There's drinking water. There's power available. And in this very ground that I'm in, it can accommodate over 2,000 people. There are 2,500 beds in this facility alone. Hostels or dormitory-like setups have also been made with a capacity to shelter nearly 5,000 people in all. With unprecedented footfall expected in the coming days in Ayodhya, authorities are now ensuring that people are providing all possible facilities for a memorable Ayodhya visit. With Akshita Nandagopal in Ayodhya, Bureau Report, India Today. Now, as we get closer to January 22nd, there's of course a lot of curiosity of what the temple will look like, a lot of curiosity of what the Ram Lalla idol looks like. I spoke to a tailor here in Ayodhya, the man who's been stitching the clothes for the Ram Lalla idol in the current Mandir and will be doing so for the new idol as well. And he gives us a glimpse of what Ram Lalla could be wearing on the big consecration day. आप ही बनाते हैं, सिलते हैं कपड़े? 1985 से हमारे श्री पिता श्री बाबूलाल श्रीवास्तव और भगवत प्रसाद श्रीवास्तव हमारे बड़े भाई साहब हैं और मैं शंकर लाल श्रीवास्तव। उस समय सन 85 में लाल दास जी पुजारी थे, उनके माध्यम से हमारी एक बड़ी मशीन ये और एक छोटी मशीन ये वहाँ विवादित ढांचे के नीचे रखी जाती थी, यानी गुम्बद के नीचे 2 मशीन वहाँ रखी जाती। पिताजी अमनिया करते थे और हम दोनों भाई बैठ के वहाँ सिलते रहे। ये कर्म सन 92 तक चला। जब ढांचा गिरा तब से हम लोग पुजारी जी के माध्यम से ही आ रहा है और यहीं से हम लोग पोशाक सिल के दे रहे हैं। कितना दिन लगता है एक ऐसे कपड़े सिलाने में राम लल्ला के लिए? एक सेट पोशाक सिलने के लिए हमको 48 घंटे का समय मिलता है, तो हम 48 घंटे में ठाकुर जी का हम बना के तैयार कर देते हैं। अभी जो नए मंदिर में नया मूर्ति होगा, तो नए मंदिर में क्या आप ही सिलाएंगे? 4 इंच की मूर्ति है। वहाँ जो हम लोग ट्रस्ट के तरफ ट्रस्ट से बुलावा हुआ था, हम लोग गए थे नापने के लिए, बड़े भाई साहब हमारे गए नापे और 51 इंच की वो मूर्ति है। वो इसी प्रकार इतना ही लंबाई चौड़ाई का ठाकुर जी का पोशाक बनेगा और स्थापना वाले दिन पहनाया जाएगा। लेकिन स्थापना वाले दिन जो पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवार को हमारे प्रभु सफेद कपड़ा धारण करते हैं। तो अब सफेद धारण करते हैं, लेकिन स्थापना है, शुभ काम में हमारे यहाँ पीला वस्त्र धारण किया जाता है। तो अभी इसके बाद आपने काम शुरू कर लिया नया मूर्ति के लिए? जब तक अभी हमें ट्रस्ट कपड़ा नहीं देगी, अभी कपड़ा तो वहाँ डिस्कस हो रहा है कौन सा कपड़ा दिया जाए जो बढ़िया से बढ़िया लगे। जैसे अगले दिन जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उसमें नवरत्न जला गया था, और अब अगर ठाकुर जी के लिए पोशाक बनेगा तो हो सकता है उसमें हीरा भी जला जाए। अगर मुझे ट्रस्ट हीरा पन्ना पोखराज देती है तो वो भी हम जड़ेंगे कि जिससे हमारे ठाकुर जी पहने और शोभायमान लगे, कि जो देखे तो देखता ही रह जाए। तो 2 मूर्ति होंगे, एक तो नया रामलला की मूर्ति होंगे, दूसरा जो आप इतने सालों से सिला दिया, तो उनके लिए वो जो भी बनेगा एक सेट कप, जैसे हरा बना, पीला बना, सफेद बना, लाल बना, साथ में 7 रंग का जो भी बनता है सबका एक सेट एक कलर का। हमारे यहाँ चाहे किसी भी मंदिर में देखिए, अगर जो कपड़ा राम जी पहनेंगे, लखन लाल जी पहनेंगे, हनुमान जी, शालिग्राम जी, जो भी है, जितने मूर्ति है वहाँ सब एक कलर में, पर्दा बिछौना सब एक कलर में होगा। तो जो हमारे बड़े सरकार हैं, इनका अगर बनेगा लाल तो सबका लाल, पीला अगर बनेगा तो सबका पीला बनेगा। मतलब एक सेट जो भी बनेगा एक ही डिजाइन, एक ही कलर का, कलर एक होगा।
Now, interestingly, in the city of Ayodhya, as part of the January 22nd preparations, and even before that, there's a massive setup for 1,008 Havan kunds. Now, 1,008 fires will be lit at the same time, Havans will be lit at the same time. You're going to have pundits all chanting together. So it's going to be, of course, a lot of energy that reverberates in that area. Why 1,008? What's the significance of this kind of a Maha Havan that's being organized in Ayodhya? I tell you in this report. As part of the consecration ceremony that will be happening at the Ram Mandir, just a few kilometers away at this grand venue that you see behind me, the Prime Minister will be making a stop. This is where 1,000 Havans will be lit. It's a Havan kund that's been set up here with 1,000 Havan kunds essentially all inside this venue. I can show you what the Havan Kund looks like. It's absolutely spectacular, and you can only imagine the kind of energy that will reverberate from this location when you'll have 1,000 priests, saints all coming together, chanting together, and of course having that Havan going. Prime Minister Modi will be here on 22nd January and then make his way to the Mandir. So let's show you what the Havan Kund looks like. An elaborate consecration ceremony that will see the city of Ayodhya transformed like never before. And as part of the Pran Pratishta ceremony, 1,000 priests will take part in a Havan ceremony. Prime Minister Modi will make a stopover at this venue before making his way to the Mandir and take in the chants and the energy. Just a few kilometers away from the Ram Mandir, you'll have the Prime Minister making a stop here in these grounds, which has 1,008 Havan kunds like this one. It's tied with a sacred thread, this red cloth placed on top to show really how auspicious this is. And what I'm entering is the Nav Kund. Now, 1,008 Havan kunds are there, and I'm sure you're wondering what's with that number. Interestingly, when the Prime Minister comes here, you're going to be seeing over 1,000 priests all chanting at the same time, all of them, of course, with that fire lit. So you can imagine the amount of energy that will essentially reverberate from this ground. Preparations, as you can see around me, are still underway. But let me put some of those questions forward about the significance of this moment and also why 1,008. I have with me Pandit Bhim Shastri ji. Namaste, Pandit ji. Jai Shri Ram. आप पहले हमको ये बताइए कि जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये नव कुंड है, इसका मतलब क्या है? 1,008 कुंड इसलिए है कि 1.25 करोड़ आवतियां लगेगी, तो 1-2 कुंड में तो संभव नहीं है इतनी आवतियां, इसलिए 1,008 कुंड का जो संकल्प है जगत गुरु जी का, इसलिए वो 1,008 है। और इस यज्ञ के जो आचार्य है वो हमारे गुरुदेव राजस्थान से डॉक्टर बालकृष्ण जी कोसिंग होंगे। Pandits are hard at work here, securing all preps in line with traditions, as bricks with hues of red and yellow are being put across the Havan. कुंड के पास में प्रणिता और प्रोक्षणी 2 पात्र होते हैं हवन में, उसको रखने के लिए, और हवन कुंड के पास में ब्रह्मा का स्थान होता है, तो ये ब्रह्मा के लिए आसन तैयार हो रहे हैं। Devout Babas have come from far and wide to be part of the consecration ceremony. This yagya in the name of Lord Hanuman will echo across Ayodhya. 22 तारीख को जब श्री राम लला अपने सिंहासन पे विराजमान होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी आप जैसे पूछ रहे हैं तो एकदम मन और आंखें भर रही हैं, मन अजीब हो रहा है बोलते बोलते, और खुशी में मतलब ऐसे आंखें डबडबा रही हैं बहुत। मैं कहता हूं पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में ये सब दशा सबकी हो रही है। कब हम उस घड़ी का फल का इंतजार जो 500 वर्षों से था, वास्तव में कितने हमारे पूर्वज, कितने हमारे बुजुर्ग, कितने हमारे नातेदार, रिश्तेदार कई बार आए, कई बार उनके शरीर छूटे होंगे, और उसके बाद आज हम सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। This Havan Kund with the 1,008 fires will be a historic one and like no other the country or world has seen. With Akshita Nandagopal in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
Now, what I've been noticing a lot here in Ayodhya in the last few days is that there are people from across the country who are already coming down, particularly from the south. There are people from Andhra Pradesh, from Tamil Nadu, from Karnataka who constantly flock here. I've been speaking to several of them and they say that for the last many years we've been coming here, and of course we have more reason to come as well. So here's the story of a man who's coming all the way from Hyderabad to Ayodhya on a Padayatra to express his devotion to Lord Ram, and he comes bearing gifts. राम से चल के राम पे आए Challa Srinivas Shastri has begun his 7,200 kilometer long Padayatra. This 64-year-old Ram Bhakt will walk all the way from Hyderabad to Ayodhya to gift Lord Ram these gold Charan Padukas. The Padukas weigh around 9 kilograms. Shastri carries these Padukas on his head while he makes his way to the Ram Nagari. अभी राम जी का अयोध्या में कोर्ट तीर्प आने के बाद मैं कुछ तो मेरे वजह से कुछ तो करना बोल के एक ईंट चांदनी का ईंट 2 किलो का चांदनी का ईंट बना के लेके कलेक्टर साहब को दे दिया। बाद में और 4 मांगा, वो 4 भी दे दिया, 5 ईंट दे दिया उधर शिलान्यास में। बाद में ये कुछ तो राम जी को कुछ तो करना बोल के 10,000 लड्डू बन के उधर बांट रहा हूँ रोज। 3 साल हो गया। अभी भोजन भी दे रहा हूँ साउथ इंडिया से आने वालों को। These padukas are worth 65 lakh rupees. Shastri is retracing the Ayodhya Rameshwaram route, mirroring Lord Ram's Vanvas in reverse. He aims to reach Ayodhya by the much-awaited Pran Pratishtha ceremony. Meanwhile, a 2,100 kilo bell has been handed over to the Ram Mandir Trust. More than 400 workers in Uttar Pradesh's Etah took 1 year to make this special bell for Ram Lalla's Ayodhya Mandir. ये सबसे बड़े गौरव की बात है कि 550 साल बाद हमारी पीढ़ी जो है इस मंदिर को बनते हुए देख रही है, और ये जलेसर और जिला हमारे एटा के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग जलेसर से घंटा बना करके भगवान नाम के चरणों में अर्पित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जलेसर और हमारे जिले दोनों के लिए गौरव की बात है। ये 2100 किलो का सिंगल पीस मोल्डेड घंटा है जिसमें कोई जॉइंट नहीं है किसी भी प्रकार का। ये अष्ट धातु का बना हुआ घंटा है। With only days left for the Pran Pratishtha, preparations in Ayodhya to welcome Ram Lalla are in full swing. And that's all we have time for on this broadcast. As I slip into a short break, we'll continue, of course, getting you all the updates from Ayodhya. But it's been a fabulous 4 days for me. I'll be heading back to the studios come tomorrow. But here on India Today, we'll continue tracking what's happening here in the beautiful city of Ayodhya as it gears up for the January 22nd Pran Pratishtha ceremony. India, as you know, is a land of diversity where countless stories are born every day. A brand that has celebrated the rich mosaic of our country, India Today, is the brand that has been covering stories from all spheres of life from across the country tirelessly, making sense of the myriad India and the Indians residing in here. The story of India Today and the story of my latest film, Dunkey, which is inspired by the phenomenal dreams and struggles of the same Indians and is a story about love and friendship filled with humor and heart. हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर
क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? While my film Dunkey symbolizes the struggle of many who leave home and their loved ones behind in the hope for a better life, they miss their homeland in this tough bargain. But it's their spirit that helps them carry on. India today has been capturing the indomitable spirit of being an Indian for over 5 decades now. India today, making sense to India, making sense of India. I already tweeted in my account. 2 years back, when he's opposition leader, that time he told, I will not believe Rama. Ram Mandira, I will not give any donation to the Ram Mandira, Ayodhya Ram Mandira, because it is a disputed land. So the people ask him, no, it is already Supreme Court declared it is a Ram Mandir. No, I will not accept. This is the mindset of Siddaramaiah. I think you want to political issue statement he given, I think, for the parliament election to Muslim vote, to gain the Muslim vote. 11 बजे सूचना मिली कि यहाँ लाश है। यह बहुत दरिंदगी, जितना भी निंदा किया जाए वह बहुत कम है। इसलिए हमारी मांग है कि 24 घंटा के अंदर चाहे जो भी अपराधी हो, जिस तरह के अपराधी हो, उसको तत्काल 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार हो, और नहीं तो फिर भाकपा माले इसके लिए आंदोलन करेगी सड़क पर। बच्ची जो है ना, गोईठा लाने के लिए गई थी, जलावन लाने के लिए आलमपुर समुदाय में। रोज वही बच्ची जाती थी, तो वो आ जाती थी। उस दिन नहीं आई तो सोची कि 2 घंटा के बाद में गई। उसके बाद फिर खोजना शुरू की। उसके बाद एक मुसरी का ही आदमी इधर पर्दा पाने के लिए आता है, तो देखा कि एक बच्ची यहाँ मरी पड़ी है। जो बच गई है वो डर से कुछ नहीं बोल रही है, एकदम थरथरा रही थी। Hello and welcome to this India Today special. I'm Akshita Nandagopal and I'm coming to you from Ayodhya, the beautiful city that's undergone a transformation as we count down to the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony. I'm here on the banks of the Saryu River, which is also, of course, considered to be extremely holy. Lakhs of devotees come here to take a holy dip as well. But today we're going to be telling you everything you need to know about the historic, significant Ram Mandir ceremony, which will happen on January 22nd.
The country, the world is waiting right now for that moment when you'll have a Ram Lalla idol being installed in the grand Ram Mandir premises itself. Now, what will the ceremony be like? Remember that while on January 22nd itself, it's going to start at about 11:30 in the morning, you're going to be having for the next many days some ceremony or the other, all of it very carefully crafted, chosen based on the significance that it has to Lord Ram, to the beautiful people of Ayodhya. From Makar Sankranti, the celebrations will kick off here in Ayodhya, where everything has been put in place for a grand ceremony that will be remembered for decades and generations to come. This temple is an aspiration of millions of Hindus in India and abroad. हमारी जनरेशन को इतना जल्दी वो चीज़ देखने को मिल गई है, वेयर एज स्ट्रगल देखे तो वो बहुत पुराना है। मतलब हमारी जो पीढ़ियाँ है उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, तब जाके आज ये द मोमेंट आया है। बट हमारी जनरेशन के लिए ये बहुत क्विक है, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। आपका जो है घाट पूरा जो है बदल गया है, रास्ते का निर्माण अच्छा हो रहा है, बाईपास से जो है जो साइड से रोड आई हुई है वो भी बनाई जा रही है। इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बना के तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट तो आलीशान एयरपोर्ट है, बहुत बढ़िया बना है एयरपोर्ट। इससे यहाँ पे लाखों लोग आएंगे और लाखों लोगों को काम मिलेगा और हम हमारे देश में हमारे राम जी की जन्मभूमि हम खुद देख सकेंगे। जय श्री राम। Pran Pratishtha ceremony is not just a one-day event. It's a festival that will start on the Makar Sankranti of Hindu calendar and continue for each day from 16th January. प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। There will be a comprehensive campaign to clean temples across the country that will run side by side with Ayodhya preparations. मेरे प्रभु श्री राम जी यहाँ ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया वाला ये आस्थान है। यहाँ की धूल भी मस्तक में चंदन की तरह लगाने का सौभाग्य होता है। तो यहाँ स्वच्छता का अभियान चलाने का काम लगातार चल रहा है और आगे लगातार चलेगा। Ram devotees will celebrate and join these festivals wherever they are. On 22nd January, a festival of lights will be celebrated across the country. 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। Here's the complete program of Prabhu Shri Ram Mahotsav from 14 January to 22nd January. 14 January is Makar Sankranti. On this day, the sun enters Capricorn. It's the month of Posh in Hindu calendar. This festival is celebrated in different forms all over the country. It's considered to be a sacred day. Before the consecration ceremony at the Ram temple on 22nd January, festivals are being organized at different places from the day of Makar Sankranti. Saryu Snan, or a dip in the Saryu river by Ayodhya, holds great significance for this day. A large number of devotees will arrive in Ayodhya for this holy dip. Elsewhere across the country, people will start the Ram Utsav with a holy bath or dip in a river.
From this day onwards, there will be a ban on the entry of heavy vehicles with a radius of 100 kilometers of Ayodhya city. Security arrangements will be further tightened from this day, which will remain in force till 24th January. So there's been a lot of talk about whether the Ram Mandir is ready or not. There's a lot of work, hectic preparations that are underway. But come January 22nd, the temple premises itself will be fully ready for the Pran Pratishta ceremony. What do I mean by that? I mean that the ground floor of the temple, which is where the Garbhagriha is, which is where the sanctum sanctorum is, that will be fully ready for the Pran Pratishta ceremony. And that's all that's really needed for a consecration ceremony. Besides that, the first floor of the temple will also be ready. So ground floor and the first floor structure fully ready. There will be in fact idols placed to the first floor as well. Not just that, after the consecration ceremony, after the Pran Pratishta ceremony, after one day from 24 January, the temple doors will be opened up for devotees as well. So every one of you who's looking to offer prayers to Ram Lalla, from 24 January, you have the opportunity to do so as well. The project itself of Ram Mandir will continue till the end of this year, which will include beautification and everything else being put together. The construction of the ground floor is almost complete. The remaining work will be completed by 15th January. This floor will be adorned with 18 kapads or doors, of which 14 are gold-plated. All these doors will be installed at their designated places by 15th January. तो एक-एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा गया, तो हम भी एक-एक चीज आपको सिलसिलेवार बताते हैं। जैसे गर्भगृह में या फिर मंदिर परिसर के भीतर ही जो द्वार हैं, जो दरवाजे हैं, उनका जो निर्माण है उसमें आप लगे हुए हैं। जी जी। कैसे बन रहे हैं वो पूरा अंदर का स्ट्रक्चर लकड़ी का है, उसके ऊपर फिर पूरा गोल्ड आएगा। अच्छा, असली सोना? हाँ, 24 कैरेट का पूरा। वो हमारा टोटल 14 नंबर डोर है, गर्भगृह को मिला के, उसमें हमारा लगभग 50 kg गोल्ड है। 50 किलो सोना लग रहा है टोटल 14 डोर, 14 दरवाजों में। हाँ। तो इसके लिए तो फिर मतलब जो नक्काशी कर रहे हैं वो सोने पे करने वाले अलग होंगे? नहीं, वो हमारा क्या है, हमने पहले लकड़ी में कार्विंग किया, लकड़ी के ऊपर हमने अपना एक डाई बनाया कॉपर का, उसके बाद हम उसके ऊपर गोल्ड का ये पूरा एक लेयर चढ़ाएंगे। ऐसा हमारा प्रोसीजर है। अभी हमारा कॉपर का काम कंप्लीट हो गया और गोल्ड का काम हमारा चल रहा है। वो 1 तारीख को हमारा इधर काम चालू हो जाएगा फाइनली। हाँ। Akshat Nimantran for the consecration ceremony is being distributed across the country. These invitations are being distributed door to door. But to join the grand consecration function in Ayodhya, selected few have been invited on 22nd January, while everyone is invited for Ram Utsav. The temple will be open to the public from 23rd January. Here are the details of what is going to happen in Ayodhya till the day of consecration ceremony and how it will happen. The grand worship for the Pran Pratishtha program will start from 16th January. On 17th January, there will be a visit to the premises of Sri Ram Lalla statue and purification of the sanctum sanctorum. Sri Ram Lalla idol will be kept with water and fragrance on 18th January. Sri Ram Lalla will be worshipped with fruits and food on the morning of 19th January. On 28th January, the deity will be worshipped with flowers and gems in the morning and ghee in the evening. From 21st January, the process of worshipping with sweets, honey and medicinal herbs will start, and the deity will be sleeping in bed at night. On 22nd January, the formal program of consecration of life to deity under Mrigashira Nakshatra will be performed. Prime Minister Narendra Modi will play the role of host in the ceremony. The entire puja will be performed by the Vedic Acharya who has already reached Ayodhya from Varanasi. There will be a purification ceremony conducted from the seat or throne of Sri Ram Lalla
to the deity's bed. मुख्य पूजन की प्रक्रिया हम लोग जैसे किसी भी मूर्ति की पूजा का आरंभ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ध्यान भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करके उनको पुष्प चढ़ाएंगे, ध्यान, उसके बाद भगवान को आसन के लिए पुष्प देंगे, आसन देंगे, उनका पैर धोएंगे, चरण धोएंगे, उनको अर्घ्य प्रदान करेंगे, उनको मुख में आचमनीय जल देंगे, उसके बाद मधुपर्क देंगे, मधुपर्क के बाद भगवान का स्नान कराएंगे। स्नान संक्षिप्त तौर पर वहाँ पर षोडशोपचार पूजन 20 मिनट में लगभग होना है। बाकी सारा पूजन संपन्न हुआ रहेगा, परंतु सांकेतिक पूजन वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का षोडशोपचार पूजन माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा कराया जाएगा। The state of Uttar Pradesh is exuberant. Chief Minister Yogi Adityanath has passed the government order to ensure that starting from 14th January, daily cultural programs including Ram Katha, Ramayan, Bhajan Kirtan are to be held in all Ram temples, Hanuman temples, Valmiki temples till 22nd January. In Uttarakhand too, there will be cultural programs including Ram Katha events held for all 9 days starting from 14th till 22nd. Deepotsav will be celebrated at river banks with Kalash Yatras and tableaus of Ram Katha will be displayed. Not only Ayodhya is getting decorated, preparations to welcome Lord Ram is not limited to Uttar Pradesh only. There is enthusiasm among Ram devotees living abroad as well. Hindus in America, miles away from homeland, connected with enthusiasm in devotion to Lord Ram. They too joined the festivities in foreign shores, celebrating with chants and hymns. Faith unites devotees where distance is reduced and devotion is paramount. There is a lot of enthusiasm among the devotees in Chandrakhuri of Raipur, Chhattisgarh. People are preparing for the grand ceremony to be held here on 22nd January. Chandrakhuri is said to be the maternal place of Lord Ram. On 22nd January, while the grand temple of Lord Ram will be inaugurated in Ayodhya, devotees are preparing to celebrate locally. Ram Mandir Nirman Utsav will be celebrated on 21st January at the famous Kalkaji temple in Delhi. The temple will be decorated with flowers. There will be bhajan and kirtan in celebration of Lord Sri Ram's arrival in the new temple in Ayodhya. Bureau Report, India Today. This is the beautiful Lata Chowk, and behind me are the symbolic Surya Stambh, which has been placed right in the entrance of Ayodhya because Lord Ram is a Surya Vanshi. I don't know if you can hear it, but constantly in the heart of Ayodhya, you'll hear Lata ji's songs. Her songs on Lord Ram, on the Ramcharitmanas. And it's beautiful to say the least because it's a beautiful tribute to Lord Ram. There's been a lot of talk of how Ayodhya has essentially been transformed, keeping in mind what it stands for, keeping in mind its beautiful history. And it's not just Ayodhya. Prime Minister Narendra Modi has also put out an appeal saying don't just stick to the Pran Pratishta ceremony, but start off a cleanliness mission across the country. And he said ensure that you start these cleanliness programs in the temples, in your neighborhood, your home or anywhere close by, and thereby take this forward as well. It's a mission that's now being talked about. Yogi Adityanath will be kicking it off as well, and it's going to start on the very auspicious occasion of Makar Sankranti, not just in Ayodhya but across the country. So the message of Lord Ram is being used to also ensure that there's a larger purpose fulfilled, a cleaner Bharat for all of us. देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के
छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। BJP has asked its MPs and MLAs to identify temples in their respective constituencies where cleanliness campaigns will be conducted. Party President JP Nadda has written a letter to the states asking them to implement this nationwide plan. Earlier, the Prime Minister asked all to celebrate the Pran Pratishta ceremony in the same spirit as Diwali. मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। Other than this clarion call for national celebration for the consecration ceremony, the Prime Minister has asked everyone to adhere to the restricted invitation to Ayodhya on January 22nd. For all devotees, the Pran Pratishta at Ayodhya Ram Temple will be broadcast live for devotees to join and attend the ceremony spiritually. जनवरी 22 का जो राम जन्म भूमि स्थान पर अयोध्या में जो भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके लिए सभी लोग देख रहे और सभी लोग उसमें बहुत खुशी है। मेरे ख्याल से जो देश भर में ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा, बड़ा गांव, उस गांव में मंदिर पे पूरे एकत्रित होके सभी लोग अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लाइव ना देके ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा। And so those are all the details that you need to know about the grand ceremony, a historic one that's set to take place in just a few days from now here in the beautiful temple city of Ayodhya. The city is decked up like never before, transformed in a matter of months. And of course, the Ram Mandir, just kilometers away from where I am, is all set for the mega Pran Pratishta ceremony, which will happen on January 22nd. And count on us here on India Today to get you every update and the latest from Ground Zero in Ayodhya. That's all we have time for on this broadcast. Thanks very much for tuning in. I already tweeted in my account. 2 years back, when he's opposition leader, that time he told, I will not believe Rama. Ram Mandira, I will not give any donation to the Ram Mandira, Ayodhya Ram Mandira, because it is a disputed land. So the people ask him, no, it is already Supreme Court declared it is a Ram Mandir. No, I will not accept. This is the mindset of Siddaramaiah. I think you want to political issue statement he given, I think, for the parliament election to Muslim vote, to gain the Muslim vote. Last few days, there's been a wave of interest in Lakshadweep. One of the most popular beaches there is the Lagoon Beach. While Prime Minister's social media post has increased traffic in terms of searches and bookings for Lakshadweep, though the Union Territory is yet to witness a full-on tourist influx.
While most high-end resorts in Lakshadweep are in Bangaram, if you're planning to visit Lagoon Beach, homestays will be your best bet. Indian tour operators are now offering special packages to Lakshadweep. Thomas Cook has 4 to 6 days cruise trip ranging from 36,000 rupees to 60,000 rupees. Make My Trip has a 2,000 rupee discount on flights to Agati Island. State Express 2 is offering Lakshadweep's packages for nearly 32,000 rupees. करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मौजूद है। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंडिया टुडे ग्रुप से बात कर रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि जो फैसला आपने दिया है सबसे आगे कॉन्स्टिट्यूशन ही सही मानना चाहिए, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का नेतृत्व भी आपने मान लिया। 2018 का जो उनका लीडरशिप स्ट्रक्चर था वो भी आपने कहा कि वो सही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना राजनीतिक पार्टी जून 2022 में भी इलेक्शन कमीशन के फैसला होने के पहले भी एकनाथ शिंदे की पार्टी थी, एकनाथ शिंदे के हाथ में थी, यह भी आपने माना। यह कैसे आपने कर लिया? देखिए, इन अपात्रता याचिका में जब निर्णय लेने थे तो कोर्ट ने कुछ निकष दिए थे और कोर्ट ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बताया था कि हमें सर्वप्रथम ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सा गठ रिप्रेजेंट करती है वो हमको तय करना है, और वो तय करने के बाद उस पार्टी के डिजायर के अनुसार हमें विप रिकॉग्नाइज करना है, और विप रिकॉग्नाइज करने के बाद हमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि विप केवल इशू करना काफी नहीं है, वो विप जो व्यक्ति जिसको जो विधायक जिसको विप दिया गया है उस तक पहुंचाना, उसको सर्व करना, कंप्लीट सर्विस करना, ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से अनिवार्य है। तो जब हमने देखा कि सभी सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल टेस्ट के अनुसार एकनाथ शिंदे के जी के गुट को ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मानना अनिवार्य है और उन्होंने अपॉइंट किए विप को रिकॉग्नाइज करना आवश्यक है,